अगर आप मार्केट में 25 से 30 लाख रुपए के बजट में एक सेंसिबल एसयूवी ढूंढ रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल कि आपने टाटा हैरियर को एज एन ऑप्शन कंसिडर नहीं किया होगा. दिस राइट हियर इज द डार्क एडिशन, the latest 2024 Harrier, and in this video I'll tell you each and every detail क्योंकि ये गाड़ी 30 लाख रुपए ऑन रोड डिमांड करती है आपके हार्ड एंड मनी का. नमस्कार, मेरा नाम है तेजिन एंड यू आर वाचिंग 91 व्हील्स. So why Harrier Dark Edition? Basically, Harrier facelift is inspired by the curve concept जो showcase किया गया था at the Auto Expo, and not just in terms of the design that it looks masculine, but this all dark theme of this SUV makes it very masculine on the road. Road presence काफ़ी बेहतरीन है Harrier की, and it enjoys the strong brand value, strong resale value just because how beautiful it looks on the road. Apart from that, on the Dark Edition, you get these beautiful 19-inch glossy black alloy wheels, and the Dark extends with the dark badging. Now, in terms of positives, this design itself makes your money worth spent because at rupees 30 lakh, this SUV makes a strong case of road presence. अगर आप सड़क पे एक demanding SUV चाहते हैं, the design is the biggest positive why you should buy this car. The door third. So simply, अगर आप इस गाड़ी को consider कर रहे हैं, safety must be your first priority, and Tata has always taken care of the safety department. It is a 5-star rated GN Cap SUV, but you also get a lot of safety features. For example, ADAS level 2 आपको इस गाड़ी पे मिलता है. So that also makes your money worth spent. And not just that, जब आप दरवाजे खोलेंगे, you will realize that the ingress egress is very easy. अगर किसी भी साइज का पैसेंजर या ड्राइवर इस गाड़ी के अंदर एंटर करता है, you will feel a very easy entry and exit of the car. Apart from that, the cabin, although it's not redesigned, it has new flair of touches. For example, the dashboard, it now gets the HVAC panel with some touch inputs. आपको ये brand new नई touch screen मिलती है, and you all have all the latest features. For example, आपको 360-degree camera इसमें मिलता है for parking. You have different drive modes. You have this very beautiful looking drive mode selector for tractions basically, and this new gear shift knob which makes it feel a bit premium. ये डार्क एडिशन है, so it means everything inside the cabin is black out. Now this might not feel as airy as the rivals, but this dark edition, it has some premium touches. For example, the front leather seats, they have ventilation, they have electric adjustment. Again, it makes your money worth spent. Talking point of this cabin, especially at the driver seat, is this new steering wheel. This 4-spoke steering wheel, इसको लिया गया है again from the new Nexon, आप बोल सकते हैं, and it looks very nice, although it feels a bit weirdly placed to hold. थोड़ा सा in face feel होता है, and also the position is a bit flatter side. So starting में, if you are coming from some other brand and you're going to buy this SUV, it will feel a bit weird, but eventually it's all about time. You will get used to it. You have the pedal shifters just in case if you want to make it go really fast, and the overall seating position, especially for the drivers, is very commanding. Bonnet visible hai, you have this big glass area. The ORVMs, they give you a good idea of what's behind. Apart from that, this is all about the new Harrier. You have the digital console, lots of features, lots of comfort features, lots of premium touches at the center console, and an all dark theme with the JBL speakers just in case if you are a music head. At the rear seat, again, you have a lot of space. I think 3 people of my size can easily sit in this SUV for longer drives, but this floor hump, this is going to hinder the long driving experience. But for 2 people with luggage, with this huge center armrest, it's a very, very comfortable SUV. Panoramic sunroof gives you a very good airy feel at the behind of this SUV. However, I would have loved कि इस गाड़ी में आपको थोड़ा सा और headroom मिलता, but in terms of seating comfort, seats के design, cushioning और इन सारी चीज़ों को मिला के Harrier आपको एक complete mid-size SUV का proper experience provide करती है cabin में. But it's not about just seating. It's about driving, the driving pleasure, and the gruntful 2-liter turbocharged diesel engine. Let's hit the road and find out whether is it
worth it. तो बात करें ड्राइविंग एक्सपीरियंस की हैरियर की, गाड़ी को आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे, here you go, आपको डीजल की जो क्लैटर है वो कैबिन के अंदर पूरी सुनाई देगी। एंड दिस इज, आई विल नॉट से दिस इज इरिटेटिंग, बट येस, ये आपको भूलने नहीं देगी दैट दिस इज अ डीजल कार एंड यू डू नॉट हैव द ऑप्शन फॉर अ पेट्रोल। विद द फेसलिफ्ट द डिज़ाइन हैज़ चेंज फॉर द इंटीरियर, फॉर द एक्सटीरियर, लेकिन मैकेनिकली गाड़ी जो है वो अभी भी सेम है। ऑल्दो यू हैव दिस न्यू 4-spoke स्टीयरिंग व्हील, बट 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन अभी भी सेम पावर आउटपुट बनाता है। एंड यू अगेन हैव द सिमिलर 6-speed automatic torque converter gearbox. What we love about the Harrier, first thing first, the ride quality is just superb. As you can make out, Julian passenger seat पे है and Shipranshu at the rear, 3 people on board, AC is running and the car feels so composed. At the city speeds, अगर आपके commute में बहुत सारी खराब सड़कें हैं, you will love Harrier. गाड़ी most of the time composed रहती है, कोई bounciness आपको feel नहीं होगी, फ्रंट पे कोई नोज डाइव फील नहीं होता है। इनफैक्ट अंडर हार्ड ब्रेकिंग एज वेल द कार रिमेन्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सस्पेंशन इज वर्थ ₹30 lakh एंड इफ यू आर समवन हु लव्स टू ड्राइव ऑन हाईवे या आपकी एनुअल रनिंग में हाईवे ड्राइविंग ज्यादा है, Harrier is the most sensible option in this price bracket. बात करें स्टीयरिंग फीडबैक की, एट सिटी स्पीड्स, लो स्पीड्स पे बिलो 60 km/h इट फील्स अ बिट लाइट, लेकिन शॉर्ट टर्निंग रेडियस होने की वजह से एंड दिस न्यू 4-spoke डिजाइन, ये आपको होल्ड करने में एंड रोड से कनेक्टेड फील करने में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। हाउएवर दिस इज नॉट अ वेरी फन टू ड्राइव कार, तो अगर आपको कोई ऐसी एसयूवी चाहिए जो रोड से बहुत कनेक्टेड फील करवाए एंड यू कैन ड्राइव इट फास्ट अराउंड द कॉर्नर्स, आई थिंक देयर आर बेटर ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल द जीप कंपास इटसेल्फ, इट ड्राइव्स very enthusiastically, but this one, it's made for more of a seated driving experience because the suspension has been tuned for comfort. इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं. इफ यू वांट टू सेव सम फ्यूल यू कैन स्विच टू द इकोनॉमी मोड, एंड इफ यू वांट टू ड्राइव इट एट हायर स्पीड्स ऑन द एक्सप्रेसवेज यू हैव अ डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड बटन ऑन द सेंटर कंसोल. बट मोर और लेस आपको कोई बहुत मेजर चेंज इन ड्राइव मोड्स को सेलेक्ट करने के बाद फील नहीं होगा पावर में. लो एंड टॉक की अगर मैं बात करूं, इट्स मोर देन एनफ. सो सिटी स्पीड्स पे कोई भी स्लो मूविंग ट्रैफिक को आप ओवरटेक करना चाहते हैं, जस्ट अ लाइट टैप ऑन द थ्रॉटल एंड यू कैन इजीली ओवरटेक एनीथिंग. ऑन द हायर स्पीड्स, इफ यू आर ड्राइविंग इट फॉर एग्जांपल लेट्स से 100 to 120 km/h, द इंजन रिमेन्स very composed and calm, all because of the 6-speed gearbox. RPM levels low रहते हैं and you get good fuel economy as well. In fact, in the morning, Shipranshu was driving this car on the highway between 80-90 km/h and the displayed fuel economy was 19.2. Currently, I am driving it in the city, 3 people as you can see inside the car. MID अभी भी 13.2 kmpl show कर रहा है. So this means that Harrier is a decently fuel economical car as well. What is not so good about is the braking department. अंडर इमरजेंसी ब्रेकिंग गाड़ी जो है वो अपनी स्ट्रेट लाइन को लूज कर देती है. दिस हैज बीन अ सॉर्ट ऑफ ट्रेंड विद द टाटा कार्स. वी हैव सीन कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दिस एंड द हैरियर आल्सो हैव दिस सॉर्ट ऑफ एन इशू जो एड्रेस किया जा सकता है विद द न्यू जेन हैरियर जब भी वो आएगी. ऑल्सो इनिशियल बाइट जो है वो आपको ब्रेक से इतनी बेहतर फील नहीं होगी जितने राइवल्स की होती है. ऑल्दो ब्रेकिंग से इतना भी कोई आपको नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा कि कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है, लेकिन लोअर स्पीड्स पे आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा ब्रेक पेडल को. ऑल इन ऑल डिसेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड ₹30 lakh, well they are moderately justified. लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ हसीन है विद दिस एसयूवी. देयर आर नेगेटिव्स एज वेल. फॉर एग्जांपल, विद द स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी देयर इज स्टिल इनकंसिस्टेंसी. लुक एट द बोनेट, यू हैव द स्पेस राइट हियर. इट लुक्स क्वाइट ऑड एंड इफ यू पुश इट ऐसा लगता है कि देयर इज सम क्वालिटी कंट्रोल इशू दैट टाटा मस्ट हैव टेकन केयर ऑफ, बिकॉज एट ₹30 lakh दिस इज नॉट व्हाट यू विल एक्सपेक्ट. एंड सिमिलर इरेगुलरिटीज आपको कैबिन के अंदर भी मिलती हैं. इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव्स, ergonomics for the driver are also not very sorted. I already told you the weird positioning of the steering wheel. Pedals के साथ भी कुछ ऐसा ही है. The pedals are a bit weirdly placed. So if you are going for very long drives, there is a possibility that your right foot will not feel very comfortable.
On the left side of the center console, especially for the driver, the leg will definitely touch the dashboard. ये थोड़ा सा प्रीमियम डिज़ाइन जो है ये आपके लेग को टच करेगा ही करेगा. I don't know if this could have been very well designed or a slimmer design would have solved this issue, but this is something that feels a bit odd on the interiors of the cabin. In terms of quality, although the build quality is very strong, the plastic used is not up to the mark. आपको rattling जो है, this specific media unit has covered near about 8,000 kilometers, and there are a lot of rattling noise, especially from the parcel tray, from the door panels, and I think this is not what you expect when you spend rupees 30 lakh. So what is the moral of the story? Basically, Harrier Dark Edition specifically बनाया गया है to enjoy the highway in its purest form. The suspension, it's lovely. The car feels very composed at triple digit speeds. The build quality is superb. It has a lot of features, and the road presence, I need not to explain about it. However, the quality issues and the driving experience is not what you would expect from a 30 lakh SUV. अगर आप थोड़ा सा और स्ट्रेच कर पाएं अपने बजट को, you can easily buy the Jeep Compass Limited, which offers you a good brand value, more premium cabin, and a fun to drive experience as well. However, the Tata logo right over here enjoys a strong resale value, and obviously, Desh ka Loha is always strong. Let us know in the comments what you think about the Harrier. Is it justified at this price tag? Would you opt for the Safari at this price tag? या आप किसी और rival की तरफ रुख करेंगे? I'll meet you again very soon. Until then, please keep watching 91 Wheels and always drive safe.